किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा, अदम एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे। वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। फजल रहमान का टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए, न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, सदर मुमलिकत और वजीर आजम की शिरकत। OIC वज़राए खारजा काउंसिल इजलास के मंदूबीन खुसूसी तौर पर मदऊ थे। यौम पाकिस्तान परेड में जंगी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा। कमांडोज के दस्ते ने लहू गरमा दिया। शाहीन, गौरी और नसर मिसाइलों की नुमाइश। तुर्की, सऊदी अरब, आज़रबाईजान, बहरीन और उज़्बेकिस्तान के दस्तों की भी शिरकत। पाक फजाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। J-10, J-16, JF-17 खट्टर तैयारों की घनघरट। Throw your gaze towards right as approaching the venue is a three. Pull up now. ये उठान हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत हैं और तमाम ममालिक के साथ अमन चाहते हैं। इनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर कायम हैं और कायम रहेंगे। हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। किसी भी बैरूनी जाहरियत से सख्ती से निपटेंगे। तमाम मुल्कों के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल जरूरी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। यौम पाकिस्तान की परेड, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अवाम में घुल मिल गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरियों से मुसाफे के लिए सिक्योरिटी को पीछे हटा दिया। इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास। इत्तेहाद, अमन और तरक्की के लिए शराकतदारी अहम मौजू रहे। कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। हंगामी इमदाद के मुंतजर अफगान अवाम से फौरी ताउन पर जोर। इस्लामोफोबिया के मसले को उजागर करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों की तारीफ। मुस्लिम उम्मा को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दरपेश मसाइल से निपटने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तफसीली इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के मसले को मौसर अंदाज में उजागर किया। कुवैती वज़ीर खारजा डॉक्टर अहमद नसर अल मोहम्मद की रवानगी से कबल गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबे जिंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों की खिदमात का एतराफ़। ऐवान सदर में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अवार्ड्स दिए। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी खुसूसी तकारीब। पाकिस्तान और कश्मीर यकजान दो काले। श्रीनगर समेत मकबूजा आबादी के मुख्तलिफ इलाकों में यौम पाकिस्तान के मौके पर तहनीती बैनर्स आवेजा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और पाकिस्तानी क़यादत की तस्वीर नुमाया। दुनिया भर में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीबात। पाकिस्तानी सिफारत खानों में परचम कुशाई। गैर मुल्की सिफारतकार और मेहमानों की शिरकत। रंगारंग सकाफती शो भी पेश किए गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए।
अरकान पार्लिमान का इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन, आलिया हमजा और सायरा बानो की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्टिकल 63A की तशरीह। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कल सदारती रेफरेंस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सरबराही करेंगे। I'd like to begin by thanking lots of people. To begin with, I would like to thank the Prime Minister of Pakistan, Prime Minister Imran Khan, for taking a personal interest and overseeing the preparations of this 48th session. I would like to thank all our participants, in particular the ministers who traveled from different continents to be here for the 48th session. I'm happy to share with you that the participation at the ministerial level was close to 46, and we had 800 delegates. 800 delegates. That's a very, very encouraging number. We had dignitaries from observer states as well. I would like to thank the OIC General Secretariat, the Secretary General, for the support that we received from him and his Secretariat. I also wanted to thank the Chinese Foreign Minister. He took out time and he was here on my invitation and he spent 2 days here. And this is the first time that the Chinese Foreign Minister or any Chinese Foreign Minister participated in an OIC event of this high-level event. And he very clearly said, and let me reiterate, that his objective was twofold. One, to give a clear message to the Muslim world that China is interested in an enhanced engagement with the Islamic countries. And secondly, you must have noted that in his statement, he also expressed a desire that China is willing to make investments in OIC countries that are signatories to the BRI agreement. And he gave a figure of about $400 billion. I have to thank the support that I received from different ministries within Pakistan to make this possible. I would particularly like to thank the Ministry of Information and Minister Fawad Chaudhry and his entire team for the support and coordination with us. I would like to thank the Ministry of Interior for ensuring security and other arrangements. I would like to thank Chairman CDA, Commissioner Islamabad and his team for the immaculate arrangements made, the Armed Forces and Islamabad Police for security as well as traffic management. Ladies and gentlemen, as you know, the 48th session was themed Partnership for Unity, Justice and Development. And you must have noticed that the Prime Minister, in his keynote address,
highlighted the importance of this forum and suggested if we want to make this forum even more effective, then the answer is unity. If we are united, we will be heard and taken more seriously. Our voice will carry more weight, and that is completely in line with the message that Pakistan has shared with other brotherly countries. Under my stewardship as chairman of the CFM, I would do my best to revitalize this organization and forge unity further. God has been very kind to the Ummah. There is no shortage of talent, human resource, or natural resource. We only have to know how to optimally utilize it. And if we can do that, we can get better results. The Ummah is facing challenges, and you know that. I will try and see how we can play a role, how Pakistan can play a role in building bridges and resolving those challenges. The theme talks about justice, and the Prime Minister and many other statements touched on two very glaring examples of injustice. One is the issue of Jammu and Kashmir. Despite repeated resolutions and clear support that we've enjoyed over the years from OIC, the matter remains unresolved. And the issue of Palestine. These are two very glaring injustices, deprivations, and clear examples where human rights are being trampled. You see oppression and occupation. We have resolved, and I've also announced, a ministerial conference which will work with other member states to go beyond resolutions, to chart a way forward so that we can start implementing the desire of the Council and put together an action plan. Pakistan is happy to share with you, I'm happy to share with you as a chairman, that on the issue of Jammu and Kashmir, I was very clear when we met in Islamabad in December. My objective was very clear, that we have to draw international attention to the situation, the humanitarian situation in Afghanistan. And I think to a large extent we succeeded in getting their attention. And you saw post 17th extraordinary session, there were concessions made, sanctions were relaxed, and humanitarian assistance was not just announced, certain measures were announced to provide relief to our Afghan brothers and sisters.
In this session, it was my desire, since Pakistan was going to chair it, that the issue of Jammu and Kashmir must be discussed and highlighted, because I feel that since the 5th of August 2019, the situation has dramatically changed and deteriorated further. I'm happy to share with you that in the meeting of the contact group on Kashmir, we were able to have a very good discussion. I'm grateful to all ministers who were there, and they contributed in a big way. And we took a number of decisions. We've agreed to go beyond passing a resolution. And we've put together an action plan. In that action plan, we've agreed that different member states will meet regularly and coordinate their positions on the question of Jammu and Kashmir dispute. Also, monitor the ever deteriorating situation of human rights in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Hopefully, our representatives in New York, Geneva, and Jeddah will not only be coordinating, they will be meeting more regularly to highlight the plight of the people there. So we have a clear plan of action for member states, for members of the contact group, for the Secretariat and the Secretary General, the Special Envoy on Kashmir, and the Independent Permanent Human Rights Commission. Similarly, on the issue of Palestine, you know, Pakistan's position has been very clear and consistent. There is no ambiguity. There are no ifs and buts. There's clarity on this issue. And we demonstrated this clarity when, in the month of Ramadan last year, you saw a very sad incident at Masjid al-Aqsa. Myself, the Foreign Minister of Turkey, the Foreign Minister of Palestine, Tunisia, and others coordinated, went to New York, and forcefully advocated for an immediate ceasefire. The issue was debated and discussed in the Security Council thrice, and there was no agreement. There was no forward movement. We collectively moved towards the General Assembly, and you saw what happened in the General Assembly. So Pakistan's commitment to the Palestinian cause was once again demonstrated to the people of Palestine. And in my meeting that I had with the Palestinian Foreign Minister today, they were not only appreciative, they acknowledge what Pakistan has done for them and is willing to do in the days ahead. I would like to share
some major outcomes of the 48th session with you. The Islamabad Declaration is one outcome that will be circulated to you. I don't have to spell the details, you can read it. It will be available on the website and it will be circulated to you. The second outcome was a very forceful resolution on the Jammu and Kashmir dispute. The third outcome, as I said, our focus was Kashmir, the issue of Kashmir. So the third outcome was a comprehensive joint communique by the contact group on Jammu and Kashmir. The fourth outcome is the action plan on Jammu and Kashmir. The fifth outcome is operationalization of the OIC Humanitarian Trust Fund on Afghanistan. The decision was taken in the extraordinary session. You must have seen the signing ceremony, and now that has become a reality and that fund has been operationalized. The sixth outcome is the appointment of a special envoy on Islamophobia. And this indeed is a great achievement of the OIC. Collective wisdom and unity shown at Niamey and worked around in New York produced this result. And the nation and the entire Ummah is delighted at this outcome. The seventh outcome is the welcoming the session welcomed the establishment of the Rahmatul Alameen Authority by Pakistan. And as the Prime Minister said, it is important to understand and study the Prophet, peace be upon him, for character building. It is important. We can look at him as the greatest leader ever produced, and we draw inspiration from his sunnat. The eighth outcome of this session is the resolution on threats to peace and security in South Asia. You're aware what happened on the 9th of March. Pakistan clearly has expressed its concern. I have spoken to the Secretary General of the United Nations about it. I have written to the Secretary General of the UN as well as the President of the Security Council, highlighting the seriousness of the matter and demanding not just a joint probe, which I think is essential, but raising some very cogent questions that need to be answered. And they need to be answered to ensure that an accident, if it was, is not repeated again. That accidental fire could have led to an accidental war in South Asia. It is as serious as that. So here, I'm grateful to members of the OIC sharing our concern and agreeing with what Pakistan has highlighted. The ninth outcome is the Pakistan's proposal
to convene a ministerial conference to identify mechanisms and tools for promotion of peace and prevention of conflicts in the Muslim world. I'm also happy to share with you that through the deliberations that we've had, 140 resolutions have been agreed upon, and they are on Palestine, matters of political matters, security, humanitarian, economic, social, legal, financial issues, Muslim minorities, Islamophobia, arms control, terrorism, COVID-19 response, illicit financial flows, and corruption, mediation, OIC reforms. On top of that, we've also had 20 resolutions sponsored or co-sponsored by Pakistan, and a resolution celebrating the 75th independence anniversary of Pakistan. The last point that I want to raise is many delegates, foreign ministers in their statements mentioned the Ukraine conflict. The Prime Minister in his address also mentioned the Ukraine conflict, the ongoing conflict, and expressed his concern over this conflict, the loss of life, and the danger of a spillover or expansion of this war. The OIC members, I was chit-chatting, discussing, and gradually there was a desire, and it evolved, because everybody's concerned after this deliberation that the ongoing conflict, it was deliberated, discussed in the 48th session, and this session, and it is now in the outcome document as well, calls for immediate cessation of hostilities to prevent further loss of life. It has stressed the need for the establishment of humanitarian corridors to ensure safe movement of civilians and humanitarian supplies. This session urges both sides to engage in a meaningful dialogue to find a solution and prevent conflict. Expresses willingness of the OIC member states to support and facilitate the dialogue process. Today, this morning, I met the Prime Minister along with the Chinese Foreign Minister, and we discussed this situation. And I'm happy to share with you, China is in agreement, and China feels that if OIC, which is, non-partisan here, and China, which has, been non-partisan and is
advocating ceasefire, are willing to work collectively and after deliberations, we are willing to play a role to mediate and see that this conflict comes to an end, and the threat and the insecurity the Europeans are feeling and the loss of life is human lives are protected. Pakistan, and as Foreign Minister of Pakistan, I will share this with you. We are desirous of being a partner in peace, not in conflict. And that is why Pakistan has been treading very carefully, completely understanding international law, the UN Charter, advocating dialogue and diplomacy. We will try and play our role. Thank you very much. Thank the Foreign Minister. I would now like to invite the OIC Secretary General, His Excellency Hussain Brahim Taha, for his remarks. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en français comme il y a 3 mois. Il y aura le traducteur qui va essayer de parler en anglais. Je voudrais, avant tout, en tant que secrétaire général de l'OCI, vraiment adresser tous mes remerciements au peuple pakistanais, aux autorités pakistanaises, pour l'accueil qui a été fait à toutes les délégations qui sont venues participer à cette importante réunion. I'd like to speak in French in addressing you, the honorable participants, just as you did 3 months ago. As Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, I would like first of all to express my deep thanks and appreciation to the authorities of the Islamic Republic of Pakistan and to the people of Pakistan for the warm welcome extended to all our delegations in this meeting. Cette importante conférence coïncide avec le 75e anniversaire de la fête nationale du Pakistan. Je voudrais donc profiter de cette situation pour féliciter le peuple pakistanais pour cette grande cérémonie qui s'est passée ce matin et que tout le monde a participé. Je voudrais vraiment féliciter le peuple pakistanais pour ce 75e anniversaire de la fête nationale de son pays. As this event coincides happily with the 75th anniversary of the independence of the Islamic Republic of Pakistan, I would like to avail of the opportunity to extend my heartfelt congratulations to the people of the Islamic Republic of Pakistan and to reiterate our full sharing of the ceremony and happiness of the people, as we have seen today in the parade organized in Islamabad, and to which all the people of Pakistan partook in different ways. En fait, notre conférence s'est bien déroulée dans une bonne atmosphère, avec une forte présence de délégations jamais vues depuis très longtemps. Je pense que c'est la preuve que le peuple fait, les pays font confiance à l'OCI. Et donc, c'est une marque de confiance de cette forte présence à cette conférence. Our conference has witnessed very strong participation on the part of the member states. Les questions abordées
sont bien sûr, comme l'a dit tout à l'heure le ministre Qureshi, ce sont la question de la paix, de la sécurité, des problèmes de nos alliances avec les pays du monde pour que notre organisation puisse aller de l'avant. Les questions de l'islamophobie, par exemple, a été abordée et nous saluons tous cette bonne nouvelle concernant la journée du 1er mars, du 15 mars, qui a été adoptée par les Nations Unies comme fête, comme journée nationale de la lutte contre l'islamophobie. Je pense que c'est la preuve, c'est une preuve encore, que si le peuple de l'organisation, si les divers pays membres de l'organisation travaillent ensemble, en groupe, en croix serrée, je crois qu'ils peuvent aboutir, leur démarche peut aboutir et c'est la preuve qu'on a eue avec la journée mondiale de lutte contre l'islamophobie. The questions on our agenda for this conference have included mainly the issues of peace, unity and justice. We've also discussed of the phenomenon of Islamophobia, and we have managed to impress upon the United Nations to adopt the 15th of March of each year as the International Day for combating Islamophobia. And this is a further proof that whenever we as member states of the OIC work together, we always manage to achieve our goals, just as we have been successful in this particular case in our battle against Islamophobia. Vous savez, en parlant de l'Afghanistan, c'est un autre point qui a été adopté et il y a 3 mois, quand on l'avait annoncé, peut-être qu'il y avait beaucoup de sceptiques, mais la question, nous avons nommé un envoyé spécial, effectivement, comme l'a dit la résolution. L'envoyé spécial s'est rendu récemment en Afghanistan, où il a pu rencontrer les autorités sur place. Et je pense que le soutien à l'Afghanistan est devenu une réalité. Parce que ici même, on a signé avec, en présence et avec le ministre des Affaires étrangères et la Banque islamique de développement, nous l'avons signé, donc signé l'accord qui consiste à verser les soutiens dans un compte de la BID. Je crois que c'est fait. Le Nigeria l'a déjà envoyé $1 million. Nous nous félicitons de cela. Et je pense que les autres pays, les autres organisations participeront aussi à cette caisse pour le soutien du peuple afghan. Another issue that you have discussed in this conference has been that of Afghanistan. And you will recall that 3 months ago we took a decision to designate an envoy for Afghanistan. Many people were skeptic of this decision, but the reality shows today, as has been noted by His Excellency the Minister, that we've been successful in that regard as well. As a matter of fact, we have indeed designated an envoy, and the envoy has traveled to Afghanistan. We have decided to set up an endowment fund for the benefit of the Afghani people. This is exactly what we have done, and we have signed an agreement today in the presence of His Excellency the Minister in support of the fund, and we have already received a donation from Nigeria to the amount of $1 million, and I'm confident that other donations will come through. Comme on l'a toujours dit, la cause palestinienne demeure à la tête des priorités de notre organisation. Et le Conseil des ministres a réitéré son soutien indéfectible à la cause du peuple palestinien. As we all know, the cause of Palestine remains high on our agenda at the OIC, and we have discussed it thoroughly in this meeting. The ministers of foreign affairs have all reiterated their support for the cause of Palestine. La question du Jammu et Cachemire aussi est une autre cause juste que le Conseil des ministres a examinée. Et comme l'a dit le ministre Qureshi, notre soutien à la cause du Jammu et Cachemire a été encore réaffirmé. C'est ce qui satisfait à tout le monde.
Another question that we debated has been that of Jammu and Kashmir. And we have there again discussed it thoroughly, and as has been justly noted by His Excellency the Minister, Mr. Qureshi, this is a just cause and it has our full support, and we have reaffirmed our stand in this conference. Nous avons réaffirmé alors le droit à l'autodétermination du peuple de Jammu et Cachemire. We have reiterated in particular the right of the Jammu and Kashmir people to self-determination. L'OCI, je voudrais rappeler à l'auditoire ici que l'OCI a des membres qui se trouvent à des milliers de kilomètres d'ici. Je veux dire en Afrique. Je voudrais parler de la situation en Afrique où la population subit beaucoup d'exactions des djihadistes, enfin des extrémistes qui sont dans la région, et une situation politique très instable et très difficile. La question de la sécurité alimentaire se pose avec acuité. Je crois qu'on a eu le temps d'en parler. Je pense qu'il fallait qu'on y pense à ces populations qui vivent un peu loin du centre et qui font face à des réels problèmes dans cette partie du monde, et qui sont des musulmans, qui sont membres de l'OCI, et qu'il fallait, nous espérons qu'ils auront le soutien de tous les peuples musulmans du monde. I have another issue on my mind, and I wish to recall to the honorable participants that a large number of member states of the OIC actually live thousands of kilometers from the headquarters of the OIC General Secretariats, and I have in mind the African countries. These countries have witnessed difficulties over the past many years, difficulties in terms of the exactions and oppression exercised against them and the various offensives perpetrated by the terrorists in Africa. We also have the issue of food security, which represents a major issue for the populations there. And I hope that we will take this into consideration and extend the necessary support to our brothers and sisters in Africa. La guerre en Europe, en ce moment qui se déroule en Europe, a des répercussions très graves pour les populations. Les vivres ont commencé, les prix des vivres ont commencé à augmenter et les populations n'ont pas les moyens de s'acheter à ces prix-là des vivres. Donc la question humanitaire va se poser gravement dans cette partie du monde où vivent des millions de musulmans. Des millions de musulmans, j'ai dit. Also the issue of the conflict in Europe, meaning the Russian-Ukrainian conflict, has caused great disturbance and unrest and has made many populations, many people subject to difficult hardships, particularly in terms of the cost, a rising cost of the livelihood, and also this will entail humanitarian difficulties, and therefore we have to bear that in mind and also be aware of the fact that there are millions of Muslims that live in that part of the world. C'est pour cela que nous avons nommé un envoyé spécial qui va pour l'Afrique et qui sera sur place et qui nous enverra des informations sur la situation dans ces pays. This is why, for example, in the case of Africa, we have designated a special envoy for Africa who will travel on the ground and report back to us on the situation there. Cette décision a été adoptée par dans la réunion qui s'est tenue cet après-midi. La décision d'envoyer donc cet envoyé spécial a été adoptée et nous nous félicitons beaucoup. This decision to designate a special envoy for Africa has been taken this afternoon, as a matter of fact, and you are quite satisfied and happy with it.
Enfin, je voudrais féliciter Monsieur le ministre Qureshi pour tout le travail abattu avec succès. Cette conférence a été un grand succès à cause, bien sûr, de tout le monde, mais surtout du ministre des Affaires étrangères du Pakistan, M. Qureshi. Lastly, I would like to extend my heartfelt congratulations to His Excellency the Minister, Mr. Qureshi, for the successes achieved through this conference. We are all quite satisfied and look forward to further action in implementation of the decisions taken. Merci beaucoup. Thank you. I would like to thank the Foreign Minister and the OIC Secretary General for their remarks. Although we are running very late in the evening, but I'm sure we will have time for a couple of questions. Maybe a question from the front row. नसीम सिद्दीकी फ्रॉम अब तक न्यूज़। सर, जिस तरह ओआईसी में आपने कश्मीर का मसला, फ़लस्तीन का बाकी मामलात भी डिस्कस किए हैं। कश्मीर में तो 70-80 लाख की आबादी है जिसके ऊपर जो मोदी हुकूमत या इंडिया मजालिम ढा रहा है, लेकिन वहाँ पे अब करोड़ों की तादाद में जो मुसलमान रह रहे हैं और दूसरी अक़लियतें भी वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे जो लिंचिंग के मसाइल हो रहे हैं या उसके अलावा जो मुसलमानों के ऊपर वो जुल्म मजालिम ढा रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई बात हुई और क्या कंक्रीट स्टेप्स लिए गए इन तमाम मामलात के लिए? अगर आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब सुना और अगर आपने मेरा स्टेटमेंट अगर आप उस पर मुताला फरमाएँ तो आपको उसमें वाज़े यह पैगाम मिलेगा कि हमारी तशवीश कश्मीर के बारे में तो थी, लेकिन अब ये मसला कश्मीर से बाहर भी जा चुका है। जिस किस्म का हिजाब पर जो कर्नाटका में कदगन लगी है और जिस तरह से मुसलमान बच्चियों की तालीम के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, तो मामलात मकबूजा कश्मीर से बढ़ गए हैं और जो सिखों के साथ, दलित्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ जो हो रहा है इस वक्त बेपनाह तशवीश है, जो कि सिर्फ हमें नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो समझता है कि हिंदुस्तान अपनी पुरानी डगर से हट गया है। वो हिंदुस्तान जो गांधी का, नेहरू का तसव्वुर पेश करता था, आज वो हिंदुस्तान मौजूदा हुकूमत में हिंदुत्व और आरएसएस की सोच उजागर कर रहा है। ये मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जी, मैं बिफोर आई यहाँ मुझे भी पॉइंट आउट कर दिया आप ही के सवाल का कि देयर इज़ एन अडॉप्शन ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन ऑन मुस्लिम माइनॉरिटीज़। ये हमारी गुफ्तगू में भी आया है और उस पर करारदाद भी पास हुई। ये अली हुसैन फ्रॉम बिजनेस रिकॉर्डर। फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपने जैसे अभी फरमा रहे थे आपके मीडिएशन ऑन रशिया एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, तो जिस तरह चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने भी विलिंगनेस शो की है, तो आपने बात की कि पाकिस्तान की ये डिज़ायर है, क्या ओआईसी के लेवल के ऊपर भी ये एक फ़ैसला हो चुका है कि हम जो है मीडिएशन की तरफ जा रहे हैं? जी, पाकिस्तान, देखिए मैं ओआईसी की बात कर रहा हूँ कि ओआईसी हैसियत एक मौसर ग्रुप के इस पे अपना किरदार अदा करे और जो चीन के वज़ीर ख़ारजा से सुबह तबादला ख्याल हुआ है वो भी अपना वज़न हमारे पलड़े में डालने के लिए तैयार है, ताकि चीन ओआईसी के ममालिक मिलकर अमन की कोशिश और जुस्तजू करें और डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रमोट करने की कोशिश करें। मैं ये भी कहता चलूँ कि मुझे उन्होंने चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इस कॉन्फ्रेंस के बाद चीन की दावत दी है और मैं आज, देखिए आज है ना 23 है, मुझे उन्होंने दावत दी है और इंशाअल्लाह मैंने चीन जाना है चंद रोज़ बाद और
ان موضوعات پر میری بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ چین میں مزید اس پر بات ہوگی. Sumaira Khan from Sama News. Foreign Minister, you had a delegation from US as well. اس ساری پروسیڈنگز کے اوپر OIC کی ساری پروسیڈنگز کے اوپر ان کی جانب سے ظاہر چین کے حوالے سے پاکستان کے چین کے ساتھ مراسم پر بھی کچھ تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں وہ. تو اس OIC کی ساری آؤٹ کم کے اوپر اور پاکستان اور چین کے حوالے سے کیا ان کی جانب سے کوئی ریزرویشنز تھے جو کہ تھوڑا سا نیوز میں بھی ہم دیکھتے اور سنتے رہے؟ جی آپ کی اطلاع کے لیے جو چین کا ڈیلیگیشن اور جو ان کی ڈیلیگیشن کی سربراہ تشریف لائیں ان کے ساتھ دفتر خارجہ میں میری ایک ملاقات بھی ہوئی اور گفتگو بھی ہوئی اور اس میں اس 48ویں اجلاس کے ہمارے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یوکرین کے بارے میں کانفلکٹ کے بارے میں جو ایک تاثر ابھر رہا تھا اس سے مجھے موقع مل گیا کہ دو بدو پاکستان کا موقف پیش کرنے کا اور وہ وجوہات بتانے کا کہ پاکستان نے یہ جو ایک غیر جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم امن کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہماری خواہش ہے امن کی اور ہمیں تشویش ہے کہ معصوب جانیں جو ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں جو نقل مکانی ہو رہی ہے اس پر ہم سب کو تشویش ہے. آپ کے علم میں ہے کہ چند روز پہلے اس اجلاس سے آسٹریا کے وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ یورپ کا ایک اہم ملک ہے. انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ اس وقت تک کوئی 3.25 ملین جو ریفیوجیز ہیں وہ یوکرین سے دوسرے ملکوں کی طرف منتقل ہو چکے ہیں اور ان کی اسیسمنٹ کے بعد ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ دس فگر مائٹ گو اپ ٹو 10 ملین اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی یہ جو ریفیوجی موومنٹ ہوگی. Ladies and gentlemen, the Foreign Minister has an important engagement with a number of visiting foreign ministers. I am afraid. جی جہاں تک چین کا آپ کا سوال تھا میں اس کو بھول گیا. دیکھیے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انہیں پاکستان کا جو چین کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا واضح طور پر جانتے ہیں اور انہیں کوئی اس کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. البتہ میں یہ کہتا چلوں انہیں حیرانی ہندوستان کے موقف پر ضرور ہوئی ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ممبر ہونے کے باوجود ہندوستان ان کے ساتھ ایک طرف تو پینگیں بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن ایک نہیں دو نہیں 4 جگہ ہندوستان نے ان کی توقع کے برعکس ایک فیصلہ کیا ہے. Thank you. Can we take one? دیکھیے میں آخری کوشچن لیتا ہوں کیوں. I'll tell you why. میں نے جتنے افریقن ہمارے فورن منسٹرز آئے ہوئے ہیں افریقن کانٹیننٹ کے ان کو میں نے عشائیے پہ دعوت دی ہے. 8 بجے کا ٹائم تھا اور 10 بج گئے ہیں. مجھے کئیوں نے کہا ہے کہ پھر اس کو ہم نہ ہی سمجھیں تو میں کہہ رہا ہوں. Thank you. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور OICs کے سیکرٹری جنرل نیوز کانفرنس کر رہے تھے جو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر ہم براہ راست آپ سے شیئر کر رہے تھے. سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا کی نوٹ ایڈریس پر شکریہ ادا کیا گیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا
کہ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین براہم طاہا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چینی وزیر خارجہ کا خصوصی شمولیت پر شکریہ ادا کیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ چینی وزیر خارجہ کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ چین اسلامی دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے. خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ مادر وطن کو خوشحال اور مستحکم بنانے کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لائی جائیں گی. دن کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی. ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. یوم پاکستان کی سب سے اہم تقریب مسلح افواج کی پریڈ تھی، جس میں ملکی قیادت اور OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے مندوبین شریک ہوئے. اس مرکزی تقریب میں ملکی ثقافت اور یکجہتی کے رنگوں کے ساتھ ساتھ جنگی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا گیا. یوم پاکستان کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کو آگے بڑھانے اور خود مختار فلاحی ریاست کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا، عدم اعتماد والا میچ جیتیں گے. اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے اپنے تمام کارڈز شو کر دیے. ان کو خود معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ رہ جائیں گے. ہم انہیں بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. عمران خان نے کہا کہ یہ کسی کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ گھر بیٹھ جاؤں گا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست لوٹ مار اور چوری چھپانا ہے. فضل الرحمان سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے اور اس کا ٹیم سے باہر ہونے کا وقت ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط فوج ملک کی ضرورت ہے. سیاست کے لیے فوج کو بدنام نہ کیا جائے. نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب لیا گیا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں 27 مارچ کو ہونے والا جلسہ تاریخی ہوگا. ایک سوال پر عمران خان نے کہا کہ چودھری نثار علی خان سے ملاقات ہوئی اور ان سے تعلق 40 سال پرانا ہے. پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا اور کسی بیرونی جارحیت سے سختی سے نمٹا جائے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی بلیٹن کا وقت ختم ہوا. رضوان رونق اور سلما کوثر کو اجازت دیجیے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.